also the autonomy of the Panchayati Raj institution. It is also a serious concern of the democratic movement in the country. Autonomy of the state does not mean the autonomy of the Raj Bhavans. Autonomy of the state does not mean the autonomy of the Raj Bhavans. The existing wrong notions of the government, governors and the union government should be corrected. The governors are holding the bills passed by the assembly in the name of concurrent list or reductory powers. The union government has so far ignored the demand of the states to place at least the residuary powers of legislation in the state list. The ministers are here, but the government, the union government, is not ready to hand over these residuary powers to the states. We have seen the examples of usage of residuary powers in many ways against the interest of the states. In agriculture sector, the union government has made new laws, but it was withdrawn by the people because of the struggle of the people. About 800 people martyred in the struggle. But the governors, the titular head of the nation, were silent. They did not make any single statement against the move of the union government, the move of the government against the people, the move against the farmers of their state. On the other hand, many times the governors have criticized the state government. When the state government intervened for the protection of the people in the state assemblies, passed the resolution against the anti-people laws made by the union government. The strongest position against the anti-people laws of the union government has been expressed by the Legislative Assembly of Kerala in the resolution. But the titular head of the state took the stand against the resolution, against the interest of the state and the interest of the farmers. Then, what is the meaning of the usage? The head of the state, the word head of the state. We all know the federal structure and great values of the constitution will be destroyed by these kinds of legislations by the union government. In education sector, state government have faced various issues. Everybody knows the extreme centralization in education sector is the one of the motto of the union government. The issue of need still exists. The Tamil Nadu state, the representative from Tamil Nadu is here. Tamil Nadu state government has taken a very strong stand for the protection of the interest of their state in the education sector. Naturally, it is against the interest of the union government. It is against the wishes of the union government. The Legislative Assembly has passed the resolution against the need. The governor of the state openly criticized the state government and their principled position on the issue of need. The powers in the union government, the union list, are in the hands of the union government. They are taking the decisions unilaterally without any inclusion of the opinion of the states. Moreover, there is no formal institutional structure for the mandatory consultation between the union and the states for the legislation under the concurrent list. Sir, state revenue and the role of the governor should be discussed here. Why? This is an important subject. The revenue of the state is facing a lot of problems because of the intervention of the governors. In this great republic, one of the governor in India openly told the public that he did not sign the budget speech of the state government. It has created an uncomfortable situation in the state. The duty of the governor
is to follow the advice of the cabinet. The wise men who have adorned this post had worked in such a way. But reality of the spirit is that the wisdom is rare in Raj Bhavans. The post-liberalization period witnessed a sharp decline in the fiscal health of the state government. Most of the states are facing fiscal crisis. The important factor behind this fiscal crisis strain is the policy of the union government. That is why the states are facing the fiscal crisis. Many states have tried to introduce different alternative measures to overcome the situation. But unfortunately, then the governors are making hurdles. The governors are making hurdles. The residuary powers of taxation in the sphere of services are being unilaterally used by the union government. To the total exclusion of the states, the GST captured the entire right of the taxation of the states and LSGs. The allocation of the money to the states is linked with the reforms in the administrative sector. The financial allocation. Honourable Member, may I just request you, in the previous session, you had taken about 21 to 31 minutes roughly to speak. You have taken about 15 minutes. So if you think about concluding shortly, then other members will also get an opportunity. I will finish. Thank you. Because you had already spoken in the earlier session, that is why I'm just requesting. Thank you. The residuary powers of taxation, already I mentioned here, the allocation of the money to the states is linked with the reforms in the administrative sector. The financial allocation of the union government is not charity. It is the right of the states. So the financial allocation should not be linked to any kind of reforms by the union government. The governors should stand for the financial autonomy of the state. It is the duty of them. The financial burden of the states caused by the governors should be discussed. Fiscal crisis of the states and the expenses of the governors should be debated. I have received an answer from the government to my question that the total expenditure of the National Mission for Libraries in the year 2019-20 is only 73 lakhs. Annual expenditure of some Raj Bhavans is more than 30 times. Respected Chair, media has reported Maharashtra government has given an answer to an RTI question. They revealed that the expenditure of governor for 2 years is 60 crore rupees. It is the 10 times of the allotted amount of the union government to National Mission for Libraries. Currently, the expenditure of the running of the office of the governor and the family of the governor is the duty of the state. This expenditure of the governors should be audited by the society. The governors are appointed by the union government, but the salary and other allowances are paid by the state government. Appointed by the union government, but the salary paid by the state government. You need to start it is wrapping up, irrational. Honourable Member. The salary of the representative of the union government appointed by the union government should be paid by the union government. The burden of the salary and upkeep should not be transferred to the state. 1 minute, within 2 minutes I will finish. The Raj Bhavans are representing the colonial era of India. Majority of the Raj Bhavans are not only the residents of the governors, but also their leisure houses. Look at the existence, expenditure and facilities of the Raj Bhavans. In Maharashtra, 4 Raj Bhavans, Mumbai, Nagpur, Pune, Mahabaleshwar. Sir, one governor is residing in 4 palaces in a single state. A palace for 3 months. That means for the rest of 9 months, the palace is empty. Then how this palace will be maintained? When governor is not there, who will occupy the palace? Crores of Indians are living without a shelter. But a governor, a titular head of the national state, is using 4 palaces.
While these kind of practices are continuing, during the travel, the VVIPs, Chief Minister and Ministers, are utilizing the circuit houses or guest houses. Then why the permanent palaces for the governor in different places? They hardly stay in these palaces. Uttarakhand, sir, 2 Raj Bhavans, Dehradun and Nainital. Nainital Raj Bhavan occupies 220 acres land, which includes 45-acre golf course. The residence of the governor is a highly restricted area, but the golf course is 45 acres. State government should ensure that this land is occupied, land is properly utilized. And in Tamil Nadu, sir, Tamil Nadu, there are 2 Sir, I'm giving you the last minute. Thereafter, I'll move on. I will mention only the residential. I've already indulged you in the previous session. You have spoken 31 minutes. Tamil Nadu, there are 2 Raj Bhavans. There are Chennai and Ooty. Chennai Raj Bhavan's estate is 156 acres. It is in the reserved forest area. It might be buffer zone. In Tamil Nadu, I don't know, the governor is in the buffer zone. Ooty is one of the noted tourist place of the nation. Is the governor is a tourist, sir. Winter palace, summer palace. How rich a country, sir. In West Bengal, Honourable member, I'll have to move on. Yeah. I'm moving West on. Bengal, I'm moving on. Okay, I'm moving on. 1 second. Please conclude your last comments, please. West Bengal, 2 Raj Bhavans. One is Calcutta, and second one is Darjeeling. In Odisha, your own state, 2 Raj Bhavans. One is Bhubaneswar, and another one is Puri. I think I'll have to move on. I've given you time. I've requested you repeatedly. Please, your closing comments, and we move on, please. Okay, sir. I'm finishing. These things, the governors, the titular head of the states, how they are making the hurdles of the state, functioning, administrative function of the state, these things, this August House, please discuss seriously, and I request the state, all of you take the initiative for stop the revenue, making the hurdle, making the hurdles and taking the wrong practices of the governor, and try to end the colonial era's practices in our nation. Thank you, sir. Thank you. With these words, thank you. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Anil Agrawal, Honourable Member. 9 minutes allotted to you. महोदय, भारतीय संविधान की एक खूबसूरती रही है कि किसी भी पद पर, किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई ना कोई क्रॉस चेक जरूर रहता है। इस संविधान में जो गवर्नर का पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और जब संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को बनाया, बहुत सोच समझकर इस पद को बनाया गया, और इस पद पर हमेशा बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहे हैं। मेरे जो मित्र केरला से आते हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, वहाँ वर्तमान में भी जो गवर्नर हैं महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर। आप अगर उनकी स्पीचेस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप किसी विद्वान व्यक्ति की स्पीच सुन रहे हैं। और हिंदुइज्म और जो जिस धर्म से वो आते हैं, मुस्लिम, उसके बारे में श्लोक और आयतों के माध्यम से जो वो बोलते हैं, पूरा देश उनकी बातों को सुनता है। अधिकांश ऐसे हमारे महामहिम हैं जो वास्तव में बहुत ही विद्वान हैं, और वो संविधान की रक्षक के रूप में स्टेट में काम करते हैं। जो मेरे मित्र ने कहा, अगर उस बात को मान लिया जाए तो पूरी जो संवैधानिक ढांचा है वो ही चरमरा जाएगा, और जो क्रॉस एंड चेक की जो हमारी एक संस्कृति है, पद्धति है, एक तरीका है, वो पूरा का पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो चुन के आएंगी,
वो पूरी तरह से मनमानी हो जाएंगी, बेलगाम हो जाएंगी। कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे भी लोग चुन के आ जाते हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, किसी भी मुद्दे पर चुनकर आ गए और उसके बाद वो मनमानी करने की कोशिश करते हैं। और मेरे विद्वान मित्र ने जो कहा, जिस प्रकार से वो महामहिम को हटाकर और उस पद को दोबारा लाना चाहते हैं, उसमें उनका जो सजेशन है उसमें ये है कि साहब वहाँ के जो एमएलएज हैं, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ के जो कॉरपोरेशंस हैं, वो सब मिलके महामहिम का चुनाव करें, इलेक्शन। महोदय, स्टेट में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है, और एक स्टेट में अगर दो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दोनों इलेक्टेड हो जाएंगे तो शायद जो पर्पस था हमारे संविधान निर्माताओं का गवर्नर के पद पर नियुक्त करने का, वो पूरी की पूरी तरह से डिफीट हो जाएगा। महोदय, मेरे मित्र ने एक ये भी सुझाव दिया है अपने बिल में कि 2/3 अगर एमएलएज को चाहें तो वो गवर्नर को हटा सकते हैं। गवर्नर के पद पर वर्तमान में जो नियुक्ति होती है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति इलेक्टेड पद है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उसमें हर विधानसभा के विधायकगण, लोकसभा के सांसदगण, राज्यसभा के सांसदगण, सबकी डिफरेंट वैल्यूज एमएलएज की रहती है, एमपीज की रहती है, और पूरे देश में उसका एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, और उस चुनाव के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति का पद पर व्यक्ति आसीन होता है। उनकी इंटीग्रिटी को या उनके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शंका की दृष्टि से देखना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। मैं आपको पूर्व में भी ले जाना चाहता हूं, जो मेरे मित्र मुझे लगता है गवर्नर के पद से परेशान हैं। कुछ कांग्रेस सरकारों में इस प्रकार के गवर्नर्स रहे हैं जिनका आचरण ठीक नहीं रहा, तो मुझे लगता है वो दृष्टांत उनके सामने है, लेकिन अधिकांश मामलों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है और गवर्नर्स की अपनी एक गरिमा है। आप देखिए, जब स्टेट इलेक्शंस का चुनाव होता है उस समय गवर्नर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर गवर्नर भी राजनीति से प्रेरित होकर काम करने लगे तो मुझे लगता है पूरी की पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है, चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाने की व्यवस्था है, उनका सदन में जो बहुमत सिद्ध करने की व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो सकती है। महोदय, राजभवन के रेजिडेंसेस के बारे में कुछ मेरे मित्र ने बताया है कि किसी स्टेट में 3 हैं, कहीं 4 हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजभवन वास्तव में कई स्टेट में ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें 1 सीट या 2 सीट महामहिम राज्यपाल के लिए आरक्षित रहता है। बाकी का जो राजभवन है वो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा यूज किया जाता है, उनके सेक्रेटरीज के द्वारा यूज किया जाता है, और उन राजभवनों में जब महामहिम नहीं भी रहते तब भी स्टेट में वीआईपी गेस्ट उसी राजभवन में निवास करते हैं। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित है। कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे गणमान्य व्यक्ति होते हैं जो उस स्टेट में विजिट करते हैं और विजिट करते समय उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो उनको उन राजभवनों में ठहराया जाता है। वो राजभवन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी लोकेशंस पे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो उसमें जो हमारा बाकी की जो चिंताएं होती हैं उन महामहिम व्यक्तियों को ठहराने की, वो चिंताएं हमारी दूर हो जाती हैं। महोदय, आज जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा गवर्नर को चुने जाने का, चयनित करने का जो सिस्टम है वो भी बहुत लोकतांत्रिक है,
और अगर उसमें हम किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट बहुत खराब होगा। हमारा जो गवर्नर का पद है बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद है और राज्य सरकार की मनमानी को रोकने का एकमात्र जरिया है कि वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उसमें बहुत सारे निर्णय करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि उस व्यवस्था पर भी हमारे न्यायालयों द्वारा उचित कार्रवाई समय समय पर की गई है। अगर किसी महामहिम राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय गलत लिया गया है, कोर्ट में चैलेंज हुए हैं बहुत सारे निर्णय, विशेषकर जो उनके निर्णय चैलेंज हुए हैं वो निर्णय हैं जो सरकार के फॉर्मेशन से हैं, सरकार के बनाने से हैं, चीफ मिनिस्टर के शपथ से लेके चीफ मिनिस्टर नॉमिनेशन, चीफ मिनिस्टर का सदन में बहुमत, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कई बार चैलेंज हुई हैं। उनमें भी लेकिन अधिकांश समय जो न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय आए हैं। माननीय सदस्य, 1 मिनट आपका और है, और 1 मिनट है। कोई बात नहीं, मैं कंक्लूड करता हूं सर। उनमें भी जो व्यवस्थाएं रही हैं वो ऐसी रही हैं कि उनमें अधिकांश निर्णय जो महामहिम राज्यपाल के द्वारा लिए गए वही निर्णय अपहेल्ड हुए हैं। मैं पुनः अपने मित्र से ये अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो ये बिल लाया है इसको वो वापस लें। उन्होंने कुछ हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से या और किसी दबाव में ये बिल लाए हों, लेकिन मुझे लगता है अगर वो बिल वापस लेंगे तो संविधान की मर्यादा बचेगी। संविधान भारत का जो निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर बनाया है और एक ऐसे पद पर जो बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, उस पे हम किसी भी प्रकार से अगर मुझे लगता है छेड़छाड़ करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैं पूरे सदन से ये अनुरोध करूं कि इस बिल के विरोध में अपना मत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable Member Dr. L. Hanumanteya ji, 15 minutes. You have 15 minutes allotted by your party. Sir, thank you, Chairman. Sir, the private member bill moved by Dr. Shivadasan is timely, and this upper house, with the representation of different political parties, has to discuss thoroughly, and I request the House to have a unanimous decision on this in implementing the bill so that the friction between the central government and the state governments, particularly the governments in the center and non-political attitude will prevail in the state, sir. Sir, Article 153 says, there shall be a governor in each state and one person can be appointed and he can be given 2 or 3 states as in charge. A governor is appointed by the president and is a nominee of the central government. Sir, it is stated that governor has a dual role, that he is the constitutional head of the state, bound by the advice of the Council of Ministers of that particular state. Sir, he functions as a vital link between the union government and the state government. Sir, the governor has the power to grant pardons, reprieves, according to Article 161. Sir, the governor with the CM, head of the state, that accept some conditions for discretions, he has to take the advice of the Chief Minister of the state, who is the head of the executive. Sir, the governor appoints the Chief Minister and other ministers according to the Article 164. He assents, withholds the assent,
or reserves the bill for the consideration of the President passed by the Legislative Assembly. Then, sir, the Governor may promulgate the ordinances under certain important circumstances according to the Article 213. Sir, Governor is envisaged as the apolitical head. This is a very important factor to be considered. He is always an apolitical head who must act on the advice of the Council of Ministers. However, the Governor enjoys certain discretionary powers granted under the Constitution. For example, giving or withholding assent to a bill passed by the legislature, determining the time needed for a party to prove its majority or which party must be called first to do so, generally after the hung verdict in any election during the time. Sir, there are no provisions laid down for the manner in which the Governor and the state must engage publicly when there is a difference of opinion. There is no provisions laid down so far, sir. Sir, the Governor has 5-year term in an office. Sir, in 2001, the National Commission to Review the Working of the Constitution held that Governor owes his appointment and his continuation to the Union. There is an apprehension that he is likely to act in accordance with the instructions received from the Union Council of Ministers. It is only an apprehension, but it is not the fact. In the Constitution, sir, there are no guidelines for exercise of the Governor's powers, including the appointment of a CM and dissolving the Assembly. There is no limit set how long a Governor can withhold assent of a bill. The Governor sends a report to the Centre which forms the basis of the Union Cabinet's recommendations to the President for invoking Article 356. This is another important article which the Governor has to follow very carefully in the interest of the Centre as well as the state. Sir, why the attempts have been made to address concerns over the alleged partisan role played by the governors is the question I think we have to address today. Sir, changes regarding the selection of governors. Sir, the National Commission to review the working of the Constitution appointed by the Atal Bihari Vajpayee's government in 2000 suggested that Governor of a state should be appointed by the President after consultation with the Chief Minister of the state, which has to be noticed, and no central government so far has followed this to have a consultation with the Chief Minister. Sir, the Sarkaria Commission, set up in 1983 to look into the center-state relations, proposed that Vice President of India and Speaker of Lok Sabha should be consulted by the Prime Minister in the selection of the governors. This is another proposal by Sarkaria Commission, which is a landmark commission during that period. Sir, that Punchi Commission proposal says Justice Madan Mohan Punchi Committee, constituted in 2007 on center-state relations, proposed in its report that committee comprising the Prime Minister, Home Minister, Vice President, Speaker and concerned Chief Minister should choose the Governor. This is another recommendation by the committee, sir. The Punchi Committee also recommended deleting the doctrine of pleasure from the Constitution, but backed the right of the Governor to sanction the prosecution of ministers against the advice of the state government. So it also argued for a provision for impeachment of the Governor by the state legislature. Sir, these are all the duties of the governors where we have to follow meticulously. Sir, unfortunately, today, what is happening, what are the comments in the public domain,
and how the governor's officers have been treated by the central government, and why the state governments are forced to go to the Supreme Court to implement the constitutional spirit, which are not clear guide, which they don't have a clear guidance in this respect. Sir, the Supreme Court questions, can governors kill the bills passed by the Assembly? This is the question raised by the Supreme Court, sir. The substantive part of the Article 200 empowers the governor to withhold the assent of the bill. But in such an event, governor must mandatorily follow the course of action which is indicated in the first proviso of the communicating to the state legislature as soon as possible. A message warranting the reconsideration of the bill. But in most of the cases, sir, where people are in front of the Supreme Court today, the state governments are in front of the Supreme Court today, the minimum requirement of warranting the state legislatures as soon as possible, a message warranting the reconsideration of the bill has not been followed. Many a times, years together, bills were pending in the governor's office. This is the major cause to an elected government by the governors who are the representatives of the central governments has followed. That is the major issue today which is under discussion. Sir, Baba Saheb Ambedkar has said during the draft constitution to the Constituent Assembly on November 4, 1948, Ambedkar highlighted the need to diffuse the constitutional morality in Indian society. He has also said that it is imperative to deepen the democracy, which is only a top dressing on Indian soil, which is essentially undemocratic. Sir, the journey of these 75 years of independence, the constitutionalism in India provides the perfect context to revisit the idea of constitutional morality, what Ambedkar said during that time, during 1948. It is also said the constitution and morality in light of the ongoing tussle between the governors and the elected governments, especially in Kerala, Maharashtra, of course not now, the government has changed, Punjab, West Bengal, Tamil Nadu. The noticeable factor is all these governments are non-BJP governments. That is what is to be noted today. Sir, the Supreme Court has expressed serious concern about the delays by the governors in assenting the bills passed by the state elected legislators. This violates the constitutional provisions and the doctrine of constitutional morality which Ambedkar was talking about. Sir, the Constitution of India has envisaged the role of the governors as custodians of the constitutionalism in respective of states. However, owing to the nature of appointment using nominee selection by the union government, most of the time governors abide by the obligation of the ruling dispensation rather than the constitutionalism. This is the major observation at this time, sir. Sir, this has deepened the crisis between the union governments and the state government, which is eroding the principles of cooperative federalism. Sir, the conduct of the governors in these states has resurrected the question of the need to continue the governors in office in a parliamentary democracy. That is the crisis today. That is a serious crisis today. So the fact that there is a conflict between the governor's office and the elected governments is a very sad part of the democracy, a serious concern of the democratic process. Sir, the immediate consequences of this trend are affecting the public governance and administration, erodes the harmonious relation between the state and central government, and
It also affects the governor office, destabilizes the elected government as they are under pressure and non-performing the governance. This union-state relations, overall, the federal scheme of the constitution is in the state of disequilibrium. Sir, there are some solutions suggested by the experts of the constitution and people who have experienced the 75 years of independence. Sir, one that, firstly, the state government must be consulted before the governor's appointment by the union government. This is the suggestion, as recommended by the Sarkariya Commission. This will ensure much needed consultation between the union and state governments, thereby strengthening the relationship between both these governments in the true spirit of cooperative federalism. Sir, secondly, the Supreme Court of India must direct the Union Ministry of Law and Justice to frame the guidelines for the Governor Office in consultation with the Law Commission of India to assent to the bills on time to avoid unregulated delays in the future, which is very much required and necessary. Sir, thirdly, empower the office of the President of India. Honourable Member, you have to one recall. minute. I'll go according to your time. Empower the office of the President of India to recall the governors who are the subject of the constitutional violation in discharging the duties as per the Article 200. Article 200 has become a serious concern today, where the governors are playing with it, with the discretionary powers given by the Constitution to them are not followed with a judicious thinking and judicious decisions. Sir, lastly, the time has come to remove the word otherwise in Article 356 through a constitutional amendment, as governors have misused the word to dissolve many elected governments in the states. Thank you. So, sir, last sentence, this will curtail some of the discretionary powers and prevent the misuse of governor's office by the union government, whichever is in the power. These things, if they are followed, the real private members will, which we are discussing, will have some fruitful decisions, sir. Thank you very much. Thank you. Honourable Member Shri Jawahar Sarkar. You have 7 minutes. Thank you, sir. Thank you for giving us this opportunity of supporting the constitutional amendment brought in by Dr. Sivadasan to introduce election of governors as a mode to save the constitution. Now, one of the most depressing news that I as a legislature, you as legislators, we all as part of the overall structure of governance, one of the most depressing news that we have heard in the last few days is the manner in which a governor, I am referring to the governor of Tamil Nadu, was pulled up by the Supreme Court for exceeding his jurisdiction. The Supreme Court has intervened from time to time, pulling up the governors of Kerala. Our governor in West Bengal has set new records, putting up the governors of Maharashtra for exceeding their powers. This all emanates from one mischievous word. I use the word, sir, one mischievous word in the Constitution that was a legacy of the colonial past. And this word is found, discretion is found in Article 163, sub-article clause 2. Now, based on this article, this is a colonial legacy. We all speak of colonial legacy, but we do not know how to define it. Anything that suits, anything that militates against our way of thinking, anything that militates sometimes against what I call the culture of the Ganga Valley, is said to be colonial and fit to be dumped out. No, it is not so. Colonialism spells itself out through the mechanics of power and hegemony. Through power and hegemony. And this is proved
to the continuation of the powers of the institution of the governor in a democratic federal setup. This post came up from the Government of India Act, Imperial Act of 1919. It was carried on through the Government of India Act of 1935, and I would inform my honourable friends on both sides that the Deputy Chief Minister of West Bengal at that time, Shyama Prasad Mukherjee, whom they respect a lot, had a series of guerrilla wars with Governor Herbert, who did not allow him to exercise his democratic powers. Now, in a free and federal and democratic India, we should have learned the lesson and circumscribed, cut the talons of the governor, but instead we put this 163(2). Today, this bill seeks to bring in 153, an amendment to Article 153 to introduce elections. Now, we can't have a diarchy, sir. This is a democratic polity. You can't have two governments of India. There is one government of India that is elected by 37% vote. We respect it. Respect also the state governments that have been elected by the same electorate for governing their states. And do not assume that just because you have a colonial post, you can interfere with it, you can trip it, you can sabotage it whenever you feel like. You cannot. You have learnt your lessons in the opposition. While in the opposition, you will learn them again when you come to the opposition. Now, having said this, West Bengal has the singular fortune of being out with the central government for 49 years. 2-3 generations. My generation has never seen any ability. And the instrument of the post of governor is used for every purpose, including the interference with the intrinsic law and order powers of the state. If there is any comment to be made, let the Home Ministry come up and make a comment. But why should a governor, advised by an undersecretary, I am saying, sir, at the cost of contradiction, all governors, irrespective of regime, are run by diktats issued by undersecretaries and deputy secretaries of the Ministry of Home Affairs. Come and challenge it and say, no, I will ask for the correspondence. I know what I'm talking about. It hurts the self-respect of any thinking person. The bureaucrats of North Bloc cannot be allowed to run a free run over the democratic aspiration of the different peoples of India. The election is because we consider the post of governor to be largely protocol, largely ceremonial, so that the chief minister doesn't have to run to every function. Seedhi baat mein keh diya. But then you can't bear such a huge expenditure. You can't go in for a huge expenditure at the lavish scale on which you have said. The lavish scale itself, whether the bill is passed or not, is a subject that government may like to review because it smacks of colonial imperialism. We have spoken, supposing, I'm giving a minute only, supposing you had a similar institution in the Government of India. Supposing you had the president telling you morning and evening, ye aapne galat kiya, aapki law and order. I mean, you can't run. You are insulting the people who have elected that government, the central government or the state government. You cannot run. We had a small instance of this when President Zail Singh was having his run-ins with the Prime Minister of India. And that is not a very pleasant experience. Remember that experience and squeeze it to the experience of states. You'll know how you have created a ceremonial post into a nuisance, absolute nuisance. I support the election because the election would again be in tandem with what the people of that state want 1 minute. for the governor, what they want for the governor. Sir, the core of our strength is federalism. As of democracy, it is federalism that represents, I come from a state that is quite distant from the Ganga Valley. I come from a state that is quite distant from Tamil Nadu. But we feel that we are all together because we are respected. If you carry away the self-respect, you destroy India. We are one because we are many. Do not try to homogenize us. With these words, I support the bill. Thank you. Honourable Member Shri Santosh Kumar P, you have 3 minutes. Thank you, Vice Chairman. Even though the mover of the bill
belongs to a political party which is very close to my party, I can't support this bill because my party, the Communist Party of India, stands for the abolition of the very post of governor. And this issue was highly debated in the Constituent Assembly as well, years ago. And Rohini Kumar Chowdhury, a prominent member from Bihar, had stated that a piece of cow dung can spoil an entire vessel of milk. She was referring to the activities of the governor of Sindh. It's not history, but this is relevant even today. Governors they have become trouble engines to destroy everything in states. I don't want to give you a details of what is happening in Kerala and Tamil Nadu. Governors have become political manipulators. So why we need the post of governor? The mover have given a detailed list of examples, how the governors are spending money, how decorative their life is, how extravagant they are. So I don't want to add anything more. To perform the role of a governor and the duties of a governor, if at all anything is there, that can be done by the Chief Justice of a state or a Supreme Court Chief Justice. Nothing more is required. So I think it is high time to think about the abolition of the very post of the governor. And secondly, I think almost all parties are in agreement of the continuation of the post of governor. At least let us think about changing the very name of Raj Bhavans. Because it's an old British name. No, I am not in favor of the name-changing virus. That virus has affected everywhere in our country, every aspect of life, sphere of life. But Raj Bhavans, these people who are sitting in the Raj Bhavan think they are Rajas of modern time. So at least let us, take initiative to rename Raj Bhavans. And moreover, I can tell you, this extra-constitutional overstepping activities of the governors must be condoned at any cost. And when we talk about the election of a governors, see, you have a minute are not relevant because the electoral college which he suggests consists of even local representatives, or representatives from local bodies. That makes it's a very strong position because the chief minister, if you want to elect the chief minister, what you want? You have to, the members of the assembly can elect the chief minister. But here to elect the governor, you need the support of members of the assembly plus local, body representatives. That makes the post conclude. of the governor. Time is running out. Let me complete, sir, please. 1 minute. Make it more, what you should say, more powerful. So that it should not be higher than the elected chief minister of a state. The chief minister is, of course, that is the highest democratically elected body in a state. Then how can be the governor above that? Then, moreover, to dismiss the governor, we don't want the representatives from the local bodies. Honourable member, your time is over. That also Please drawback conclude. of the bill. So anyway, sir, let me add this point once again, that we all have to think about the post of governor, and this post must be abolished at any cost. Thank you. Thank you. Honourable Shri R. Girirajan ji, just before you start, let me clarify that you have 3 speakers from your party, and the total time for your party is only 5 minutes. Total time. So therefore, we will be only able to provide 2 minutes or max 2.5 minutes per member. It is decided as per the roster. I can't help it. But, sir, Honourable Tiruchi ji, you are a senior member. You are part of the chair, you know. We work by the roster. We can't have a discretion. So 2 minutes, sir. Please. Sir, respected sir. Thank you, sir. Thanks, my leader, Tiruchi Siva. It's the right time to discuss the governor's need or not. I want to say in Tamil, our leader, Perunjar Anna, who has in the அவையிலே மிகப்பெரிய தலைவராக பரிணாமப்படுத்தப்பட்ட நேரத்திலே அவர் சொன்ன வார்த்தை ஆட்டுக்கு தாடி தேவையில்லை. Beard not to the goat. Like governor's post not necessary to the government, state governments. ஆட்டுக்கு எப்படி தாடி தேவையில்லையோ நாட்டுக்கு கவர்னர் தேவையில்லை. இந்த கவர்னர் பதவி என்பது மிகப்பெரிய அலங்கார பதவி. இந்த அலங்கார பதவி என்பது ஒருவரை கவர்னர் ஆக்கிவிட்டு மத்திய அரசு தனக்கு வேண்டாத அரசுகள் இருக்கின்ற இடங்களிலே அவர்களை தலையாட்டி பொம்மைகள் போல் வைத்திருப்பதற்காக கவர்னரை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலே மகாராஷ்டிரத்திலே என்ன ஏற்பட்டது? கேரளத்திலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? தெலுங்கானாவிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது?
ஏன் எங்கள் தமிழ்நாட்டிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? 15க்கும் மேற்பட்ட மாநில அரசுகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெரும்பான்மை பெற்ற மாநில அரசாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையிலே இயங்கிக் கொண்டிருந்த போதிலும் நாங்கள் அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்திருக்கின்ற நெறிமுறைகளின் அடிப்படையிலே பல்வேறு மசோதாக்களை, மக்கள் நலனுக்கான மசோதாக்களை நிறைவேற்றி கவர்னருக்கு அனுப்பிய நேரத்திலே கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளாக 15க்கும் மேற்பட்ட மசோதாக்களை தன்னுடைய காலுக்கு அடியிலே போட்டு மிதித்துக் கொண்டிருப்பவர் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டின் கவர்னராக இருக்கின்ற திரு R.N. ரவி அவர்கள் என்பதை இந்த மன்றத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். Please wrap up, please. The time limitation should fix for assent given by the governor on several issues. In India, states are also not strangers to controversies arising with their governors, most of them relating to choosing of chief ministers, conducting floor tests, dissolving legislative assemblies, recommending president's rule and delaying assent to bills or reserving them for president's consideration in the recent times besides Tamil Nadu, Chhattisgarh, Haryana and Kerala and Telangana. Article 153 of the Constitution provides for a governor in each and every state. The executive powers are vested in the governor under Article 154. Honourable member, the constitutional please conclude. scheme We'll have to move on. warrants that assent of the governor or the president is a necessary for all bills to become the law of the land. The Supreme Court in Shamshar Singh versus State of Punjab 1974 has settled the position that the governor is only a constitutional head under the executive powers of the state. I'm moving on, honourable member. Exercised I'm sorry, by the your time Council is up. I'll of have Ministers, to move on. which you have Article Shri of India. Sujit Kumar, honourable member Shri Sujit Kumar. Sorry, I'll have to move on. Shri Sujit Kumar. I'm sorry, your time is up. Honourable member Shri Sujit Kumar. No, it's as per time. It's as per time. I'm sorry. You know the rules. You know the rules. You know the rules. Honourable member, please sit down. It's not going on record. It's not going on record. It's not going on record. Please, please. Honourable member Shri Sujit Kumar. मेरा समय अभी शुरू होना चाहिए. All right. और सर आप तो दिलदार हैं, 1-2 मिनट ज्यादा दे दीजिएगा. मेरे हाथ में नहीं है, माननीय चेयरमैन साहब का निर्देश. Sir, although I acknowledge and appreciate. You have a total of 5 minutes. Sir, 1-2 minutes, sir. Sir, although I appreciate and acknowledge the sentiments and the spirit with which this bill has been introduced by my dear friend and esteemed colleague, Mr. Shivdasan, I do not support the bill because I think it is neither desirable nor feasible. And I'll give you 4 reasons, sir. One is the issue of accountability. One is the constitutional reasons. Third is the normative grounds. And fourth are the constitutional debates which have settled this issue in my view. Sir, we have to understand the difference between accountability and constitutional responsibility. The high office of governor is that of constitutional responsibility, constitutional authority, not accountability. Sir, in his arguments, the Honourable Member Shivdasanji, sir, alluded to the stature and dignity of the high office of the governor. I completely am with him on that. And he argued that because of this high office which the governor holds, he should enjoy the support, legitimate support of the people, and he should be accountable to the people. But sir, for this we already have an elected government in the state. Can you have 2 parallel power centers, one of the chief minister and one of the governor? Sir, the office of governor should evoke, sir, cooperation and respect. And to give further clarity, I would like to quote what the Constitutional Assembly member Mr. B.G. Kher had said. The most important principle of good government in a popular constitution is that no executive functionaries should ever be appointed by popular election. No executive functionaries should ever be appointed by popular election, neither by the votes of the people themselves, nor by those of their representatives. Sir, next I come to the normative grounds why I oppose this bill. Sir, the office of governor should exert an all-pervasive moral influence on the state, sir, state government and the people of the state. Sir, I'd like to quote Sarkaria Commission, which Hanumantia ji elaborately referred to. Sir, Sarkaria Commission on Interstate Relations quoted the office of governor as the constitutional head is to act as friend, philosopher and guide
to the elected government, to the Council of Ministers. And sir, if we have an elected governor, as is envisaged in this bill, sir, we will not have the check and balance, which is the core of our constitution, sir. How can an elected governor, sir, operate freely without being beholden to the party that has elected or that has chosen that person to be elected? Sir, how can the governor think independently? Sir, these are the reasons why I oppose this bill. Sir, while addressing the Conference of Governors in June 2005, the former President of India, Dr. Kalam, observed that while there are many checks and balances provided by the Constitution, the office of the governor has been bestowed with the independence to rise above the day-to-day politics and override compulsions either emanating from the central system or the state system. Sir, now I'll refer to the constitutional grounds why I oppose this bill. Sir, in our scheme of things, constitutional scheme of things, the governor plays a very important role in maintaining the federal structure of our constitution, which also is part of the basic structure in the Supreme Court judgment of 1973, Kesavanand Bharti judgment. Sir, the celebrated judgment of S.R. Bomai versus Union of India explains in detail the importance of this role, and I quote, this is the Honorable Supreme Court: "The key actor in the center-state relations is the governor, a bridge between the union and the state. The office of the governor is a vital link and a channel of impartial and objective communication of the working of the constitution by the state government to the President of India." And he goes on, the judgment goes on, because of paucity of time I will not get to it. Sir, it is also important for the House to visit the Sarkaria Commission report on the role of the High Office of the Governor, and I will briefly quote from the report: "The Governor in our system does not function as a constitutional head for the whole gamut of his responsibilities. There is an important area, though limited and subject to constitutional constraints, within which he acts in the exercise of his discretion." Honourable Member, last minute. Sir, he is a live link of channel between the union and the states. He is a live link of channel between the union and the state. Sir, finally, I will refer to the constitutional debate. Sir, on this very issue, eminent member T.T. Krishnamachari had quoted, and I quote, "The position is either you make the legislature supreme or you make the governor supreme. If you adopt the presidential system, the governor is supreme. But under the parliamentary system that we have, the legislature and the leader of the majority party in the legislature will be supreme. The choice is obvious, and that choice is logical." Sir, unquote. Sir, in their infinite wisdom, the founding fathers of our constitution had anticipated such a situation. And there was elaborate discussion for 2 full days, sir, on 30th of May 1949 and 31st of May 1949. And 2 alternatives were suggested. Sir, give me, sir, 30 seconds. Sir, alternative 1. This is Article 131 of the draft Constitution of 1948. First alternative: the governor of a state shall be elected by direct vote of all persons who have the right to vote at a general election for the legislative assembly of the state. This is the first alternative. Second alternative: the governor of a state shall be appointed by the president by warrant under the 30 seconds, sir, and sealed from a panel of 4 candidates to be elected by the members of the legislative assembly of the state, or where there is legislative council in the state by all the members. Please conclude. Sir, after exhaustive and elaborate discussion, deliberation, debate, the Constituent Assembly adopted this second alternative with some modification, which is Article 151 as it stands today, that the governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. And sir, our first Prime Minister Pandit Nehru also, sir, sided with this argument, the second alternative. Please conclude. And I feel there is no compelling reason to deviate from the wisdom of our founding fathers, and I oppose this. This is the reason I oppose this. Honourable Member Professor Manoj Kumar Jha, you have 3 minutes. वाइस चेयरमैन साहब, आपको शुक्रिया कहने में और जय हिंद बोलने में ही वक्त गुजर जाएगा। बहरहाल, माननीय उपसभापति महोदय, वाइस चेयरमैन साहब, मैं उन तमाम पीड़ित राज्यों के पक्ष में खड़ा हूं जो अपने अपने लाट साहब से परेशान हैं, और परेशानी कई तरह की है। मैं तो ये मानता हूं हमारे बीजेपी के मित्रों के पास बहुत अच्छा पूल है। अब यही कितने लोग हैं जिनको मैं चाहूंगा अपने स्टेट ले जाऊं, बिहार, गवर्नर बना करके। अच्छे लोग हैं, लोकतांत्रिक, विशाल हृदय। तो सर, माननीय उपसभापति महोदय, एक वाकया बताना चाहता हूं। 1952 में बीसी राय, कोई नहीं है तृणमूल के शायद, बीसी राय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। नेहरू जी ने
किसी को गवर्नर नियुक्त करने की कोशिश की, तो बीसी राय साहब ने कहा कि हमारे यहां नॉन बंगाली गवर्नर नहीं चलेगा। हालांकि उसके बाद काफी चीजें बदल गई, तो एचसी मुखर्जी साहब की नियुक्ति हुई। फिर 57 में वैसा ही कुछ हुआ, तो बीसी राय जी ने फिर कहा कि ना, वही बात अभी भी रहेगी, हमको बंगाली गवर्नर चाहिए। तो पद्मजा नायडू पर सहमति बनी। पद्मजा नायडू बाइलिंगुअल थी, मदर बंगाली, फादर आंध्राइट। तो एक वो दौर था जहां देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात सुनते थे, और एक ये दौर है, बाकी तो नहीं कहूंगा, फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन मुख्यमंत्री से वैर रखना। गवर्नरों ने अपना दायित्व समझ लिया। कितने नाम गिनाऊं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हजारों हैं शिकवे, क्या क्या गिनाऊं। अब हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई। वो टिप्पणी क्या कहती है? ये गवर्नर सचमुच अपने को लाट साहब समझते हैं। जब एक राज्य में राज्य की चुनी हुई व्यवस्था का मुख्यमंत्री अगर वो कुछ करना चाहते हैं, गवर्नर साहब बिल पे बैठ जाते हैं। वो बिल पे नहीं बैठते हैं, जन आकांक्षाओं पे बैठ जाते हैं। और जन आकांक्षाओं पर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है, तो आप ये यकीन मानिए कि वो चुनी हुई सरकार के लिए प्रतिरोध के क्षण हर वक्त उत्पन्न करता रहता है। मैं आपको एक और उदाहरण दूं, माननीय वाइस चेयरमैन साहब। जिन राज्यों में केंद्र की सत्ता, वाइस चेयरमैन साहब, तेरे आने और तेरे जाने में हमने सदियों का फासला देखा। कंक्लूड करें। मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट लूंगा सर, कोई नहीं, बस 1-1.5 मिनट, आपको दोबारा टोकना नहीं पड़ेगा जय हिंद से पूर्व। तो मैं देखिए तारतम्य टूट गया। क्या बता रहा था? दूसरा वाक्य बता रहे थे। कंक्लूड करें मान्यवर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, प्लीज माने नीरज जी प्लीज। माने नीरज जी प्लीज। सर नीरज भाई वाला टाइम निकाल दीजिएगा मुझ में से। आप कंक्लूड करें मान्यवर। सर कंक्लूड कैसे करूं, बीच में नीरज भाई बोल दिए। चलिए आप मैं सर इतना कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है, वहां मजबूत हो जाती है बीजेपी। जानते हैं क्यों? गवर्नर साहब 60% विपक्ष का काम कर देते हैं, वो विपक्ष में हो जाते हैं। मैंने ऐसे गवर्नर्स देखे हैं जो टेलीविजन चैनल में शाम से बैठ जाते हैं, अपनी ही सरकार के बारे में। ऑनरेबल मेंबर प्लीज कंक्लूड। सर अनिल जी प्लीज कंक्लूड करें। ऐसे में 30 सेकेंड्स प्लीज। नहीं, एक बात बताइए प्लीज कंक्लूड। अगर ऐसे बात होगी तो कोई बात कैसे? माननीय मनोज जी। सर माननीय मनोज जी, आपने कहा तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा। एक चीज जो मुझको बड़ी दुखती है, जब मैं राजनीति में भी नहीं था, बता रहा हूं सर, गवर्नर का वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का अधिकार। सर राज्य की शिक्षा व्यवस्था में राज्य की सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, तुम्हारा सेशन लेट क्यों है, तुम्हारी ये परेशानियां क्यों है, तुम्हारी वो परेशानियां क्यों है। लेकिन वाइस चांसलर के चयन का अधिकार, नियुक्ति का अधिकार राज्य की सरकार के पास नहीं है। अंत में मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। माननीय उपसभापति जी, आपने वक्त दिया, हालांकि मेरे वक्त में कई लोगों ने वक्त ले लिया, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि गवर्नर के पद पर, क्योंकि आप सत्ता में, केंद्र की सत्ता में हमेशा नहीं है, ऐसी व्यवस्था ना हो कि केंद्र और राज्य के बीच में जो अंबेडकर साहब की अवधारणा थी कि राज्य खैरात नहीं मांग रहा है केंद्र से, एक सहकारी संबंध है जो। और आखिरी इसके बगैर कहूंगा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप बाहर कहिएगा कविता नहीं सुनाई। तो सर लाट साहबों के नाम प्लीज कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जय हिंद सर। Thank you, honorable member, Dr. John Rittas, 2 minutes. Very brief, sir. Very brief. Sir, the slogan of Honorable Prime Minister is cooperative federalism. The tagline of G20 was that 3 Ds: democracy, development, diversity. In application, in implementation, the 3 D is like
डिस्टेबलाइज, डिसरप्ट, डिफेम। किसको? अपोजिशन गवर्नमेंट्स को। ये डिस्टेबलाइज, डिफेम, डिसरप्ट करने के लिए उनका हाथ एक टूल है, ये गवर्नर साहब है। ये चल रहे हमारा देश में। मिस्टर अनिल अग्रवाल उनका दोस्त है, केरल का गवर्नर, वो बार बार वहां आ रहे, उससे पूछ लीजिए। सर, my only request, I will be very brief, my only request to them is that if at all they want to ensure democracy, federalism in this country, let them adhere to cooperative federalism and remove all those people, because in our country there are two areas now, like flood affected, drought affected. One is ED affected area and governor affected area. Let us finish with this. Please pull back all your tools and ensure that your words are implemented. Let there be no difference between your words and deeds. Sir, I respect you. That's why I'm going to sit down. Thank you very much. Honourable Member Shri Khiru Mahato ji, 2 minutes. सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में राज्यपालों उपराज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उनके क्रियाकलाप भारत के लोकतंत्र के हित में नहीं है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगर जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के विधायी कार्यों में राज्यपाल के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित होकर हस्तक्षेप करेगा तो ये भारत के संघीय प्रणाली का अपमान है। प्रस्तावित विधेयक में अनुच्छेद 153 के प्रस्तुत में सुझाव के समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि राज्यपाल को किसी एक राज्यपाल की ही जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और किसी कारणवश पद रिक्त होने पर राज्यपाल के कार्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं विधेयक के प्रस्तावित वर्तमान अनुच्छेद 155 की जगह संशोधित अनुच्छेद 155 जो राज्यपाल के निर्वाचन से संबंधित है उसकी प्रतिस्थापना का समर्थन करते हुए मानता हूं कि जिस प्रकार भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से बनता है उसी प्रकार राज्यों के विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से बनते हैं। अतः जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है उसी प्रकार राज्यपाल का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगमों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। राज्यपाल उपराज्यपाल की सेवा अवधि राष्ट्रपति के मर्जी पर निर्भर है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार राज्यपाल का स्थानांतरण किसी अन्य राज्य में कर सकते हैं या पद मुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल की सेवा की कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं है, इसलिए राज्यपाल केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है और स्वयं विवेक से कार्य नहीं कर पाता। अगर राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल का निर्वाचन होगा माननीय सदस्य कंक्लूड करें, महाभियोग लगाकर उसको हटाने कठिन प्रक्रिया होगी तो राज्यपाल स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव में अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। कंक्लूड करें माननीय, कंक्लूड करें। एक मिनट। इस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना चाहिए। माननीय महतो जी कंक्लूड करिए। महोदय, संविधान निर्माण के समय मसौदा समिति ने राज्यपालों की नियुक्ति या चुनाव का मामला संविधान के सभा का निर्णय के लिए छोड़ दिया था। आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृत काल में देश मजबूत से आगे बढ़ा है और भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई खतरा नहीं है। इसलिए लोकतंत्र के संघीय ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए राज्यपाल के शक्तियों का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए मैं राज्यपालों के निर्वाचन का सुझाव देने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर D.P. वत्स रिटायर्ड, 6 मिनट। माननीय सभापति जी, मैंने डिबेट सुने, बट आई विल सी इट थ्रू द आई ऑफ नेशन फर्स्ट। डेमोक्रेसी में
चेक्स एंड बैलेंसेस से संविधान चलाया जाता है। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया इसके स्तंभ हैं। इनमें सामंजस्य और बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नर साहब का रोल कहां अहम होता है। जैसे मैंने कहा, नेशन फर्स्ट। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिटेल से डिस्कस हुआ था कि गवर्नर को इलेक्ट करा जाए या गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे। एंड मैं बताना चाहूंगा कि उस ड्राफ्ट में द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ गवर्नर इज इनकम्पैटिबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट्स। द मोड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इज मोर लाइकली टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्ट है और जो संविधान सभा ने पास किया और बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान। हमने आर्टिकल 370 भी चेंज किया, उसको स्क्रैप किया, तो अंबेडकर जी ने लिखा था कि ये एक टेम्परेरी मेजर है। तो वी हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर बाबा साहब। द गवर्नर बीइंग ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड, there is no point in making elaborate arrangements for his election and spending huge amount of money. The election of a governor would be entirely on personal issues, hence it is not in the national interest to involve a large number of voters in such an election. An elected governor would naturally belong to a party and would not be impartial. The election of governor would create separatist tendencies and thus affect the political stability and unity of the country. The system of presidential nomination enables the centre to maintain its control over the states. The direct election of governor creates a serious problem of leadership at the time of general elections in the state. The chief minister would like his nominee to contest. मैं वापस आऊंगा नेशन फर्स्ट पे। मैं खुद कश्मीर में सर्व किया 5 साल तक और ऐसे हालात पैदा हो गए कि गवर्नर राज या प्रेसिडेंट राज लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। और ये कांग्रेस शासन की बात है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी जनरल केवी कृष्णा राव 6 साल तक लगातार रहे और उसके लगने के बाद भी जो मार धाड़, असेंबली में बम ब्लास्ट हुए और कितनी वायलेंस हुई, तो मैं ये कहूंगा नेशन फर्स्ट के मद्देनजर प्रेसिडेंशियल रूल नहीं, कई दफा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी लगाना पड़ता है। जैसे लगा था ईस्टर्न सेक्टर में, हमारी सरकार ने उसको विड्रा कर लिया जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होने लगी। एक शिवदासन साहब ने कहा था, इसी तरह मैं पंजाब का जिक्र करूंगा। आप सब ने देखा है कि नौबत कहां तक पहुंची कि एक धार्मिक स्थल पे भी एक्शन लिया लेट इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने। और सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया, पार्लियामेंट भी सपोर्ट किया और 3 प्रधानमंत्रियों ने यानी राजीव लांगोवाल अकॉर्ड भी हुआ। कितने अकॉर्ड हुए और बनाई सतलुज यमुना लिंक कैनाल को पाट दिया गया। अगर और अभी भी पानी जाना मंजूर है पाकिस्तान में, जलंधर और लुधियाना इसी साल डूबे, मगर अपने छोटे भाई हरियाणा को पानी नसीब नहीं है। तो सेंटर की लगाम स्टेट के ऊपर होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही जैसा कि कहा कि डिबेट इज गवर्नर शुड बी इलेक्टेड और ही शुड बी अपॉइंटेड। आई एम टोटली फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है कि डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म भी है, डिसेंट भी है और
सेंटर की हुकूमत भी है, मगर कमांड एंड कंट्रोल में, माननीय सदस्य कंक्लूड करें। हाँ बिल्कुल करूंगा। कमांड एंड कंट्रोल का रूल है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड तो विद इन लिमिट्स हो सकती है, अदरवाइज ये फेडरेशन टूट जाएगी। और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। हमारा मुल्क मैच्योर तो है, शिवदासन जी ने कहा, वैसे कार्ल मार्क्स तो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। वो तो धर्म को भी ओपियम ऑफ द पीपल बोलते थे। और हमारा मुल्क 750 650 स्टेटों के कॉन्ग्लोमरेट से सरदार पटेल जी ने इकट्ठा किया था। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, उसमें यूनिफाइंग फैक्टर्स हैं। यूनिफाइंग फैक्टर खेल, कंक्लूड करें, 6 मिनट हो चुके। हमारा संस्कृति, हमारा सिनेमा और हिंदुस्तानी फौज। तो मैं कहूंगा, टाइम की पाबंदी का मैं पालन करूंगा कि गवर्नर शुड बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. He should achieve the checks and balances, and it is a must for keeping the country united. Thank you. Thank you. Honorable ने कहा कि केंद्र की लगाम राज्यों पर होनी चाहिए। ये लगाम शब्द केंद्र की लगाम नहीं होना चाहिए। Honorable Shri M. Shanmugam, you have 2 minutes. Unfortunately, you have 3 speakers, so I'm able to give you only 2 minutes. Please Thank start. you very much, sir. Sir, on behalf of my DMK party, I would like to thank friend Dr. Sivadathan for bringing this important constitution amendment bill for discussion. As per the constitution, role of the governor is only ceremonial, and he is a titular and head of the state because he is simply nominated by the president, in other words, by ruling party of the center. He is supposed to be a bridge between the state and union. Our party DMK earlier leader, the former leader Dr. Kalaignar, and the present leader, the Chief Minister Thalapathy Stalin, is always insisting governor should be appointed after consulting the state government in India. In India also, the founding father of the constitution have observed that the convention will be developed whereby the governor will be appointed after the consulting the state. The role of the governor is very limited and is bound by the advice of the cabinet, which has been reiterated by the judicial decisions umpteen times. The governor of Tamil Nadu is overstepping his authority and his publicity criticizing the state government and cabinet decision. Sir, the Chief Minister has mandate of the people and is elected Chief Executive of the state. When our state government took the matter is not giving the assent to the bill, the sitting over the bills by the governor. The Supreme Court expressed serious concern over the delay by the governor on giving assent to the bills passed by the state assemblies. When he returned these bills by the state assemblies, after the observation of the Supreme Court in a special session, all these bills were passed by Tamil Nadu State Assembly. During the special session, our Chief Minister accused the governor and insulting the Assembly and the people of the state by returning the bills, adding to the governor of Tamil Nadu returned the bills without stating any reason. Once the bill resent to the governor, it is like money bill. Honourable and member, has please no conclude. option but give his assent. But he acted with an ulterior motive by sending all these bills to the president. It is very unfortunate that the governor is preventing elected state government from implementing the various schemes and programs through the legislative Honourable proposals. This issue, Governor ex officio Chancellor of State Universities, is also be reviewed. In this connection, our State Honourable Assembly member, has I'll have passed to a move bill on. to I'm make sorry. a Chief Minister I'll as have the to move on. Chancellor, but the Governor has not given assent to the bill. Because of that, functioning of the university is affected. Last sentence, and please. the students, We'll have to conclude. students are not able We'll have to conclude. get a degree certificate as convocation program is not being Thank you, Honourable finalized. Member. I'm moving Many on. I'm moving demonstrations on. and signature I'm moving on. campaign were Honourable held on Member. State and Tamil Nadu. Honourable Member, I'm moving Recall on. the Thank you. governor, but the union Shri government Ajay is not Pratap taking Singh. any act. Honourable Shri Ajay Pratap Singh. I'm sorry. Nothing else is going on record, Honourable Member. Thank you. I'm sorry. Time has run out. Honourable Shri Ajay Pratap Singh, 6 minutes.
धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय शिवदासन जी द्वारा जो संशोधन विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, उस विधेयक के विपक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। विपक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों को ये सदन स्वीकार कर लेता है तो केंद्र राज्य के संबंधों पर असर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ इन संशोधनों के कारण हमारा देश कमजोर होगा। जब हम मजबूत भारत की अवधारणा पर विचार करते हैं, मजबूत देश की अवधारणा पर विचार करते हैं, तो मेरे विचार से मजबूत देश तभी हो सकता है जब हमारा केंद्र मजबूत हो। अगर केंद्र कमजोर हो जाएगा तो हमारा देश खंड खंड हो जाएगा। अक्सर हमारे विपक्षी साथी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, विविधता में एकता, लेकिन जिस सीमा तक वो विविधता की कल्पना करते हैं वो देश की एकता के लिए खतरा होता है। मेरे जैसे लोग जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, वो विविधता में एकता नहीं एकात्मता ढूंढते हैं। हमारे देश के अंदर अनेक ऐसे तत्व हैं जिसके कारण हमारा देश एक है, एक सांस्कृतिक बोध है, एक सांस्कृतिक मूल्य है, और इसीलिए हम लोग वन नेशन वन पीपुल की अवधारणा पर विश्वास करते हैं। हम जिस संविधान को हम लोगों ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, जिसके आधार पर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो संचालित होती है, उस संविधान की हमने शुरुआत ही किया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें यह नहीं लिखा गया कि हम मध्य प्रदेश के लोग, हम केरल के लोग, हम उत्तर प्रदेश के लोग। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों ने जिस संविधान को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, उसके आधार पर भारत की समस्त संस्थाओं का संचालन होना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे कोई ग्राम पंचायत हो। वो संविधान के अनुसार संचालित हो रही है कि नहीं हो रही है, यह देखने की जिम्मेदारी हमारी जो केंद्रीय संस्था है, केंद्रीय इकाई है, उसकी होती है। और अगर कहीं संविधान को उल्लंघन हो रहा है, संविधान का परिपालन नहीं हो रहा है, तो उसको नियंत्रित करने की भी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। और नियंत्रित करने के लिए सूचना, जानकारी, समय समय पर मार्गदर्शन, इसका काम हमारे गवर्नर केंद्र सरकार के आदेश निर्देश पर करते हैं। मैं दो उदाहरण देता हूं कि गवर्नर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे जनरल साहब ने अभी जम्मू कश्मीर को उदाहरण दिया है। आप सभी को स्मरण होगा गवर्नर जगमोहन जी का। अगर जगमोहन जी गवर्नर के रूप में अपनी भूमिका का न्याय जम्मू कश्मीर में नहीं करते तो शायद आज जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो चुका होता। पंजाब के उग्रवाद का जिक्र किया है जनरल साहब ने। पंजाब के हालात बेकाबू हो गए थे, गवर्नर रूल के कारण ही वहां के हालात को नियंत्रित कर पाए, और आज अगर आतंकवाद वहां पर दबा है, समाप्त हुआ है, तो इसी संस्था के कारण हुआ है। मैं शिवदासन जी की पीड़ा समझ सकता हूं। सारे गवर्नर ऐसे नहीं है, कुछ गवर्नर ऐसे भी रहे हैं जिनके आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। केरल प्रांत की जो पहली चुनी हुई सरकार, नमूदिरीपाद सरकार, उसको उनके पड़ोसियों ने भंग किया, पंडित नेहरू ने भंग किया। और धारा 356 के उपयोग की अगर हम बात करें
तो सर्वाधिक उसका दुरुपयोग जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। 51 बार धारा 356 को उन्होंने प्रयोग किया है। उसमें बहुत सारे अप्रिय प्रयोग हैं और जिसके कारण गवर्नर के प्रति एक वितृष्णा सी राजनीतिज्ञों में पैदा हुई है। लेकिन अब जब हम भारत के बारे में एक समग्र रूप से विचार करते हैं तो गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं ये भी आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जो गवर्नर की भूमिका है, गवर्नर का पद है, मैं 2 मिनट लूंगा, ये कोई नई बात नहीं है। जब आप किसी बड़े भूभाग को नियंत्रित करना चाहते हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन को एड्रेस करना चाहते हैं, तो ये आज की प्रणाली नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है, रामायण काल से चली आ रही है। अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रामायण में पात्र आता है खर दूषण मारी स्वभाव। ये कौन थे? ये रावण के गवर्नर ही थे जो समय समय पर जानकारी दिया करते थे। मौर्य साम्राज्य के कार्यकाल में भी अगर महाजनपद के रूप में जब ये हमारा भूभाग विभाजित था तो महाजनपदों में भी गवर्नर प्रणाली ही थी। हमारे यहाँ पर जब सिकंदर आए, सिकंदर यहाँ पर सेल्यूकस के रूप में अपना गवर्नर ही छोड़ के गए। हमारे यहाँ मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर, अपना राज्य बना के सौंपा। वहीं से गुलाम वंश शुरू हुआ। चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी हो, चाहे तुगलक हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, सभी ने इस प्रणाली का अनुसरण किया है। और अगर एक भूभाग, बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण रखना है, एक बड़े भूभाग को अपने की एकता को स्थापित करके रखना है, एक बड़ी पॉपुलेशन को एड्रेस करना है, तो हमको इस प्रणाली का अवलंबन करना ही पड़ेगा। और इसलिए माननीय शिवदासन जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उस संशोधन से असहमत हूं। मैं इस बिल का, संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Shri P. Wilson, as you're aware, you've got about 2 minutes. Chairman, sir, thank you very much for giving me an opportunity. Sir, when the Constitution came into force, the Constituent Assembly makers, they thought that the governor will be a guide, friend, and a philosopher. He would actually facilitate between the state and the union. That was the impression the Constituent Assembly people thought, that these functions can be entrusted with the governor. Therefore, the governor was given the functions of executive powers, that is, to carry out the business in his name, and legislative powers, that is, to give assent to the bills, and judicial powers, that is, to grant remissions. But, sir, though the governor is given these powers, the actual head, the de facto head of the government is the chief minister. The governor, who is the unelected head, is only a figurehead and is a de jure head. But today what is happening? He has to act in accordance with the Constitution. He has to act under the aid and advice of the Council of Ministers. If you see how the governors are functioning throughout India, including that of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, then even I would say Karnataka and West Bengal, they are completely ignoring the aid and advice of the Council of Ministers. They think that they are a super constitutional authority. They sit over the bills, they don't give assent to the bills, they sit over the files, they don't even act on the files or on the recommendations given by the Council of Ministers. Sir, time has come where we have to think whether these posts of the governor is required for a welfare state. Honourable Member, please conclude. Therefore, sir, I would only say that the powers of the governors can be given to the speakers. What is the powers which I now told before this House? These are all the powers that can be given to the Speaker of the House, and the Speaker of the House can exercise the powers of the governor, because the governor has become a liability to any democratically elected government. Thank you, and Honourable they Member. don't act in accordance with the Constitution. They are
in confrontation with the elected government. So time has come, sir, where the House has to debate about the powers of the governor. Sarkaria Commission has come down heavily. Punchi Commission has come down heavily. The Supreme Court has come down heavily, like Article 365, where Supreme Court gave a check and curtailed the powers of the governor. The House has to discuss and see that the post of the governors has to be abolished. Thank you very much, Chairman, sir. Honorable Shri Biplab Kumar Deb, 6 minutes. ऑनरेबल वाइस चेयरमैन साहब, हमारे डॉक्टर वी शिवदेशान जी ने जो अमेंडमेंट बिल लाया है, मैं उसका विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ उठाने वाला कदम है। सबसे ज्यादा फेडरल सिस्टम की बात इस तरफ से आजकल आता है। मैं सभी आपके जो स्टेट में मुख्यमंत्री है, मैं फेडरल सिस्टम को शक्तिशाली बनाइए, तो फेडरल सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए जो चेन है वो गवर्नर है, केंद्र सरकार के साथ। राज्यों को अकेला सरकार चलाने के लिए नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि राज्य के पास डिफेंस नहीं होता है, राज्य के पास एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं होता। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि केंद्र सरकार के पास है। इसलिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के बीच एक चेन होना चाहिए। उस चेन का जो मूल व्यक्ति है वो गवर्नर होता है। गवर्नर के ऊपर कितना खर्चा होता है, कितना नहीं होता, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ मैं मेरे मित्र को बताना चाहता हूं, मैं जब त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बना 2018 में, 25 साल वहां कम्युनिस्ट के आप लोगों का सरकार थी और मुझे मौका मिला वहां काम करने की। और मुझे उस समय सुनाई देता था पूरे देश भर में कम्युनिस्ट के मित्रों ने जो त्रिपुरा में गोल्डन ईरा चल रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है गोल्डन ईरा चल रहा है, बहुत कुछ मिलेगा। फाइनेंस में पूछा तो 13,000 करोड़ की हमारे प्रचार हुआ था, गोल्डन ईरा चल रहा था। पूरी दुनिया में उस चीफ मिनिस्टर का प्रचार किया जा रहा था जो 20 साल के मुख्यमंत्री लगातार रहे, हिस्ट्री कर रहा था। तो मुझे बहुत उत्साह था कुछ तो मिलेगा। और उसके बाद जब मैं सेक्रेटरीट में जाके चीफ मिनिस्टर के रूम में जाके देखा, जो वहां भारत के नेशनल फ्लैग नहीं है, एक भी मिनिस्टर के रूम में नेशनल फ्लैग नहीं थे, अशोक चक्र नहीं थे, क्योंकि भारत के संविधान को कम्युनिस्ट के स्वभाव में नहीं मानना इनका आदत है। वो मार्क्सवाद को मानते हैं। भारत के संविधान को जब जरूरत पड़ता है तब मानता है। इसलिए भारत के संविधान को जब भी मौका मिले उसको अटैक करना, उसको कमजोर करना ही कम्युनिस्ट का स्वभाव है। मैं कहता हूं मेरे मित्रों, स्वभाव इसको धीरे धीरे बंद कर दो। और साथ ही साथ भारत के जो स्वभाव उसमें आ जाना चाहिए। और इस देश के संविधान के ऊपर हम सवाल उठा लेते हैं, इस देश के सिस्टम के ऊपर सवाल उठा लेते हैं। प्लीज No, it's not going on record. It's not going on. Address the chair. It's not going on record. नेशनल फ्लैग जरूर लाया, मैं इसलिए गर्वीभूत करता हूं। त्रिपुरा के लोग बहुत वर्षों से चाह रहा था जो वहां नेशनल फ्लैग रूम में रहे, किंतु कम्युनिस्ट के कारण से वो नहीं पहुंच पा रहा था। मैं तो आगे जाके ये बोलूंगा, कम्युनिस्ट के एक समय तो पार्टी ऑफिस में 15 अगस्त 26 जनवरी में तो नेशनल फ्लैग नहीं उठाते थे। इतिहास है भाई। बाद में मजबूर हुआ तो नेशनल फ्लैग उठाने लगे हैं, वो सच्चाई है। प्लीज एड्रेस द चेयर, ऑनरेबल मेंबर, एड्रेस द चेयर। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने कांग्रेस के हनुमान मंतिया जी को देखा, गवर्नर के बारे में बोले जा रहे थे, सिस्टम के बारे में बोल रहे थे। भाई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार आने के बाद हम लोगों ने असंवैधानिक रूप से किसी सरकार के साथ व्यवहार नहीं किया है। मैं इसलिए अपने सरकार का पीठ थपथपाता हूं। जो भी ऐसा किया गया है दुरुपयोग, वो कांग्रेस के जमाने किया गया। कांग्रेस No, this cannot go on. No. कांग्रेस को यूपीए कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट दे के रखा हुआ था। इसीलिए डीएमके के मित्रों को बोलता हूं, आपके सरकार के सबसे गिराया ज्यादा ये इन्होंने जो सपोर्ट किया उस सरकार ने गिराया।
इसलिए इस बात को देखिए, हमारे सरकार आने के बाद हमने किसी सरकार को असंवैधानिक तरीके से नहीं गिराया, और हमने गवर्नर को जिस तरीके से काम करना है, माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में काम किया जाता है, पीएम के मार्गदर्शन में काम नहीं किया जाता है। ये कांग्रेस के समय होता था जो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काम किया जाता था, हमारे समय नहीं होता है। इसलिए संविधान को मानते हुए हम काम करते हैं। और जौहर सरकार जी अभी नहीं है, बोल रहा था तमिलनाडु के गवर्नर के ऊपर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, हाईकोर्ट ने आलोचना की, इसीलिए गवर्नर हटा देना चाहिए। तब तो इस देश में सबसे ज्यादा हाईकोर्ट ने इंटरवेंस किया है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर किया है, उनके काम काज के ऊपर किया है। सबसे पहले तो इनको उठा देना चाहिए, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। माननीय सदस्य, तो एक मिनट, लास्ट 1 मिनट। कोर्ट में कोई विषय उठे और कोर्ट इसका आलोचना समालोचना करे, इसलिए संवैधानिक सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति चले जाए और चले आए, ऐसा इस देश में नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। तो मैं मानता हूं जो इस सदन में जिस तरीके से इस बिल को अलग अलग व्यक्ति ने अपने विषय रखा है, किंतु मेरा मानना है गवर्नर बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नर के बिना केंद्र सरकार के साथ हमारा संपर्क जो है उसको चेन टूट जाएगी। और भारत इतना बड़ा देश है, उसको इस सिस्टम में रख के ही चलाया जाता है। इसलिए संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब ने सिस्टम लाया है, उसको समय समय हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किया है जो जरूरत पड़ता है, किंतु इसका कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखता हूं। और मैं आपको भी बोलता हूं, मार्क्सवाद छोड़ के भारत के संविधान पे निष्ठा पे आ जाइए। धन्यवाद। थैंक यू। May I now request Honorable Shri Naresh Agrawal ji to start? Sorry, no, Mani Naresh Bansal ji, I'm sorry. धन्यवाद सभापति जी। गवर्नर का चुनाव हो, हाँ जी, एक्चुअली सॉरी, 5:15 बजे हमें रुकना था। नहीं, अभी रोका है, हम अभी रोका है। 1 सेकेंड। माननीय नरेश जी, अगली बार जब नेक्स्ट आपका प्राइवेट मेंबर्स बिल आएगा तब आप शुरू करेंगे अपना स्पीच। 5:15 बज चुके हैं। माननीय चेयरमैन साहब का आदेश था कि अभी स्पेशल मेंशंस लिए जाएंगे, तो अगले सेशन पे अगले दिन पे जब शुरू होगा तब आप करिए। कांग्रेस को गाली अभी परमानेंट लिस्ट ऑफ स्पेशल मेंशन मिस इंदुबाला गोस्वामी जी, ऑनरेबल गोस्वामी जी, डिमांड फॉर स्टॉपेज ऑफ वंदे भारत ट्रेन एट पठानकोट रेलवे स्टेशन। Not present? Special mention, please. Microphone. Yes, please. Please start. My subject is demand for stoppage of 22439 22440 Vande Bharat train at Pathankot railway station. माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष वंदे भारत ट्रेन संख्या 22-439/22-440 पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर ठहराव के संबंध में निवेदन करना चाहती हूँ। वंदे भारत दिल्ली से कटरा आते और जाते पठानकोट से गुजरती है, किंतु इस स्टेशन पर ठहराव नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण रूट है जिसमें पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पंजाब, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा व कांगड़ा के लोगों के लिए एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। साल भर भारी संख्या में लोग मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जम्मू जाते हैं। इसके पश्चात अधिकतर लोग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हेतु मां ज्वालामुखी, मां बगलामुखी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, मां ब्रजेश्वरी व शिव मंदिर बैजनाथ आते हैं। वंदे भारत ट्रेन के पठानकोट कैंट स्टेशन पर ठहराव न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त धार्मिक स्थल पर्यटकों से वंचित रह जाते हैं। पठानकोट स्टेशन पर वंदे भारत के ठहराव से आम जन को कटरा जाने में बहुत आसानी होगी तथा धार्मिक पर्यटन को भी निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन देश की पहली ऐसी रेल सेवा है जिसमें प्रीमियर सफर का सबसे अधिक ख्याल रखा गया है।
इसलिए उपरोक्त रूट पर पठानकोट कैंट स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव लोकहित में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं सरकार से मांग करती हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को, माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव कम से कम 2 मिनट के लिए पठानकोट कैंट स्टेशन पर करवाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Shri M. Mohammad Abdullah ji, request to allow the hyper or hypopigmented vitiligo persons to join Indian Army. Thank you, Vice Chairman, sir. Attention is brought in the interest of the people who have the autoimmune disorder namely called vitiligo. Vitiligo is an acquired depigmentation disorder of great concern, affecting 1 to 4% of the world population. Sir, a person with vitiligo develops patches of skin with little or no pigmentation across their body, and it is not a lethal or infectious disease. According to the medical standard of the Indian Defence Service, a candidate is deemed medically fit when he has no hyper or hypopigmentation or any other disease of the skin. Hence, the people with vitiligo found it difficult to join the Indian Defence Service. Hence, many of them feel distressed and stigmatized by their condition. Vitiligo candidates will be of normal anatomy without loss of any appendages. They will be free from all communicable diseases and skin ailment. Even though people who have vitiligo disorder are expected to be at risk in adverse weather condition and at high altitude, the risk is meager and even not for those with mild vitiligo. Such a physically and mentally fit aspirant having all the potential to perform their duties toward the nation should not be stopped from being a soldier or officer. Hence, I humbly request the Honorable Minister of Defence to immediately look into this issue with utmost priority and take the necessary step to regulate the medical standard of Indian Defence Service so that they can be placed in civil post and ensure their service to the nation in these regards. Thank you, sir. Thank you. Shri Vijay Pal Singh Tomar, demand for starting domestic flights from Meerut to various cities by expanding airstrip under the Udan scheme. धन्यवाद उपसभापति महोदय। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना द्वारा देश के विभिन्न शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मुख्य शहर है जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ से 1857 में आजादी की क्रांति का पहला बिगुल फूका गया था, जिसकी याद में शहीद स्मारक पर एक म्यूजियम बना है। बागा ओगरनाथ का मंदिर भी पर्यटन केंद्र है और महाभारत कालीन राजधानी हस्तिनापुर मेरठ जिले में स्थित है। पांडवों के समय से वारणाव्रत, विदुरकुटी, शुक्रताल, परीक्षतगढ़ पर्यटन के केंद्र बने हुए हैं। मेरठ खेल के समान का देश का दूसरा नंबर का हब है। विश्व भर में क्रिकेट के लिए मेरठ से निर्मित बैट बल्ले का प्रयोग किया जाता है। विश्व के अधिकांश खिलाड़ी क्रिकेट सामान खरीदने यहां आते हैं। गत वर्ष एशिया स्तर के ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ जिले में यही किया गया है। मेरठ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ करीब 550 किलोमीटर, हाईकोर्ट प्रयागराज करीब 750 किलोमीटर, वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर करीब 850 किलोमीटर, गोरखनाथ धाम मंदिर करीब 800 किलोमीटर। इन सभी स्थानों पर जाने में रेल से 12 से 20 घंटे का समय लगता है, जिससे यात्रियों को काफी समस्या आती है। मानव वर्तमान में एक हवाई पट्टी मेरठ में स्थित है, जहां पर चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उड़ान योजना के अंतर्गत मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर देश के विभिन्न शहरों को मेरठ से घरेलू हवाई यात्रा शुरू की जाए। धन्यवाद। Thank you. Shri Abdul Wahab, not present. Dr. Kanivudi NVN Somu, demand to develop cruise tourism in Chennai. Thank you, Chairman, sir. Cruise tourism is emerging as one of the rapid growing segments of the leisure industry globally. The Indian tourism sector is providing major contribution to the gross domestic product GDP and foreign exchange earnings EFF, as well as for providing employment. Chennai port is one of the oldest ports in the country in the southern part of India from the time of East India Company. During the British period, passenger services were operating regularly from Chennai to Malaysia, Burma and Andaman. India's first international cruise was flagged off from Chennai to Sri Lanka in June 2023.
The MV Empress, with 750 passengers on a 5-day sea cruise, will cross 3 ports. Cruise tourism holds huge opportunity for our maritime sector, and this cruise will further boost tourism, generate employment, and strengthen the economy. The cruise was launched from Chennai's International Cruise Terminal, built at a cost of rupees 17.21 crore. The main aim of the government is to develop Chennai as a cruise tourism hub. This initiative has the potential to greatly contribute to the economic development and tourism growth in India. By 2024, the government plans to build 3 new international cruise ports with additional ferry routes through India, Sri Lanka, Thailand, and Myanmar. At the moment, there are only few ferries piled by private companies, and the cost is on a higher side. Therefore, I urge the government of India to apply government-sponsored ferries at an affordable cost, so that more and more tourists will experience cruise tourism in India. Thank you, sir. Thank you. Shri Sadanand Sheth Tanwade. Chairman, sir, my special mention is concern over revocation of Indian passport in Goa. I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to an important issue that has emerged in Goa, affecting a considerable number of individuals. The Regional Passport Office has recently revoked the passport of over 70 people due to the renewal of their Indian passport subsequent to registering their birth in Portugal. The basis of this revocation of Regional Passport Office in Goa is the birth registration in Portugal, considered as the effective date of acquiring citizenship. I urge the Minister of External Affairs to reconsider the decision of revoking Indian passports solely based on the birth registration in Portugal. I propose that the Ministry allows the renewal of Indian passports for these individuals until they acquire the official citizenship document from the Portuguese government. This measure is vital to facilitate their travel and ensure their well-being during the transition period until their Portuguese passports are ready. Furthermore, I implore the Ministry to expedite the process, enabling individuals to promptly obtain OCI cards upon acquiring Portuguese citizenship. Thank you, sir. Thank you. Shri Irana Kadari. Not present. Srimati Sulota Deo. Not present. Srimati Mahua Maji. Demand to declare Central Institute of Psychiatry, Ranchi, Jharkhand as Institute of National Importance on the line of Nimhans, Bengaluru. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. My subject is demand to declare Central Institute of Psychiatry, Ranchi, Jharkhand as Institute of National Importance on the line of Nimhans, Bengaluru. महोदय, मानसिक चिकित्सा से जुड़े इस विश्व प्रसिद्ध अनूठे संस्थान की स्थापना 1918 में हुई थी। अब जब भारत में मानसिक समस्या तेजी से फैल रही है, तो पूर्वी भारत के झारखंड, रांची के कांके में स्थित इस संस्थान की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। मानसिक समस्या के कारण 2012 से 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक क्षति का अनुमान है। लांसेट की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हर 7वां भारतीय किसी न किसी प्रकार के मनोविकार का शिकार है। आज आर्थिक सामाजिक तनाव, बेहतर जीवन प्रत्याशा और अवसाद के कारण माइग्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, डिमेंशिया इत्यादि जैसी मानसिक बीमारियां या मनोविकार हो रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लोगों को इससे बचाने और इसके समुचित इलाज के लिए अच्छे मनोचिकित्सा संस्थानों का होना बहुत जरूरी है। महोदय, रांची स्थित यह संस्थान एक ऐसा अग्रणी संस्थान है जो केंद्र सरकार की सहायता से पूर्वी भारत के लोगों के मनोरोगों की इलाज की दृष्टि से वरदान साबित हो सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री को पूर्वी भारत का निम्हांस घोषित कर इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाए, इसका पुनरुद्धार किया जाए। यहाँ शिक्षकों, पीजी के सीट, वार्डों की संख्या और अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि लोगों को सस्ती, सुलभ और विश्व स्तरीय चिकित्सा मिल सके। निम्हांस बेंगलुरु का बोझ भी कम हो, लोगों का राह खर्च, होटल खर्च बचे, समय बचे और जरूरतमंदों को सस्ती, सुलभ और विश्व स्तरीय चिकित्सा मिल सके। यह संस्थान भारत को स्वस्थ रखने में मील का पत्थर साबित होगा। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। Thank you.
Shri K.R.N. Rajesh Kumar, not present. Srimati Geeta alias Chandraprabha. Demand of GI tag for Desi ghee from Auria, Uttar Pradesh. जी धन्यवाद महोदय। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और विभिन्न जिलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हमारे जनपद औरैया को देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। महोदय, वैदिक कालों से आज तक देसी घी का स्वास्थ्य के साथ साथ पूजा अर्चना में भी बड़ी मान्यता रही है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य तो वहीं छोटे किसान जो गाय भैंस पालकर अपनी जीविका चलाने के साथ ही देसी घी को तैयार करने से अपनी आय को बढ़ोतरी करते हैं। इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद नीति में औरैया जनपद के लिए देसी घी का चयन हुआ है। देश विदेश तक जिले में उत्पादित घी को पहुंचाने एवं संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिले के उत्पाद के रूप में देसी घी को चुना गया है। जिले में देसी घी के उत्पादन और व्यापार और मजबूती देने के लिए तथा देश विदेश तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार एवं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि औरैया जनपद के देसी घी को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा प्राप्त दिया जाए, जिससे कि देश के अन्य जियोग्राफी इंडिकेशन टैग प्राप्त वस्तुओं की तरह औरैया जिले के देसी घी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थान प्राप्त हो सके। धन्यवाद। Thank you. Lieutenant General Dr. D.P. Vats, retired. Demand for capacity building in medical services. Thank you, Sabhapati ji. With the Honorable Prime Minister's call for one world, one family and one future, provision of health services to mankind becomes our duty, being the largest population base in the world, with exportable human resources, including skilled medicals and paramedics. There is a huge demand for such professionals all over the world. Skilled manpower earns and brings massive foreign exchange and simultaneously get employment opportunities. To meet the global and national demand, Ministry of Health and Family Welfare has opened 23 AIMS, out of which 21 are functional, and 706 medical colleges with paramedical colleges, which is commendable. To meet such a huge demand, government should liberalize the licensing policies to permit the medical graduates to operate emergencies, including cesarean sections, after a one-year course in surgery, gynae and anesthesia. Courses as was the practice before 1980. The medical profession should be taken out of Consumer Protection Act and rural services should have more incentives. I urge the government to look into the matter to meet the huge demand of surgeons by imparting ad hoc practical training. Thank you. Srimati Sumitra Balvik. Need for promotion of self-help grounds to develop places like Jabalpur, Mandla, Chindwara, Panchmari as tourist centers. जी उपसभापति महोदय धन्यवाद। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर खड़ी हूं वह मध्य प्रदेश से जुड़ा है। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो यह बढ़ोतरी कोविड संक्रमण के बाद पूरे भारत में पर्यटन सेक्टर में हुई है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल माना जाता है। भेड़ाघाट, चौसठ जोगनी, बांधवगढ़, कान्हा, खजुराहो आदि जैसे कई विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल हैं। इसके साथ ही बहुत से ऐसे प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से और भी विकसित किया जा सकता है। महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्व सहायता समूहों को बढ़ावा दिया है और करोड़ों महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को और सुदृढ़ बनाने हेतु ऐसे ही
स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाएं। जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी आदि स्थानों को पर्यटन के केंद्रों की तरह विकसित किए जाने से एक बहुत बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था के बढ़ते आयामों को लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। अतिथि देवो भव के मूल तंत्र को मध्य प्रदेश ने अपनाया है और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश का पर्यटन विभाग नए आयामों को छू सकता है। धन्यवाद। Thank you. Dr. L. Hanmantaiah, concern over rising number of cases of road accidents in India. Thank you, sir. Sir, concern over rising number of cases of road accidents in India. Sir, information regarding road traffic accidents is gathered through two reports, Road Accidents in India, published by the Ministry of Road Transport and Highways, and Crime in India, released by the National Crime Records Bureau. The data is solely sourced from police departments. Details about crashes are recorded through FIRs filed by involved parties. Witnesses or on-site police officers. In 2022, there were 1,50,998 cases reported for deaths due to negligence relating to the road accidents. This is 10.5% rise from cases reported during 2019 with 1,36,587 cases, which is an alarming and requires immediate intervention. Sir, however, the reporting process itself has limitations. The majority of cases are attributed to human error, overlooking other factors such as vehicle and infrastructure issues. The cause of the crash हो रहे इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनाले कई आयोजन कई मायनों में खास है। मैं अभी यहां बनाए गए पैवेलियंस देख रहा था और मैं आपकी क्षमा भी मांगता हूं कि मैं लेट भी इसी के कारण आया कि वहां एक से बढ़कर ऐसे देखने योग्य, समझने योग्य चीजें हैं कि मुझे आने में विलंब हो गया और फिर भी मैं 2-3 स्थान तो छोड़ने पड़े मुझे। इन पैवेलियंस में कलर्स भी है, क्रिएटिविटी भी है, इसमें कल्चर भी है और कम्युनिटी कनेक्ट भी है। मैं इस सफल शुरुआत के लिए संस्कृति मंत्रालय, उसके सभी अधिकारी, इसमें प्रतिभाग कर रहे सभी देशों को और आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे यहां कहा जाता है कि किताब जो है वो दुनिया देखने की एक छोटी सी विंडो के रूप में शुरुआत करता है। मुझे लगता है कला मानव मन के भीतर की यात्रा का महामार्ग है। साथियों, भारत हजारों वर्ष पुराना राष्ट्र है। एक समय था जब दुनिया में भारत की आर्थिक समृद्धि के किस्से कहे जाते थे। आज भी भारत की संस्कृति, हमारी प्राचीन धरोहरें पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज देश विरासत पर गर्व, इस भावना लेकर अपने उस गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है। आज आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़े हर क्षेत्र में आत्मगौरव की भावना से काम हो रहा है। चाहे केदारनाथ और काशी जैसे हमारे सांस्कृतिक केंद्रों का विकास हो, महाकाल, महालोक जैसे पुनर्निर्माण हो, या आजादी के अमृत काल में भारत सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है, इसके लिए ठोस प्रयास कर रहा है।
भारत में हो रहा ये बिएनाले इस दिशा में एक और शानदार कदम है। इसके पहले हमने देखा है, यहां दिल्ली में ही इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ था। अगस्त में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन भी किया गया था। इन कार्यक्रमों के जरिए हमारा प्रयास है कि भारत में ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव को संस्थागत बनाया जाए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए। हम चाहते हैं कि वेनिस, साओ पाउलो, सिंगापुर, सिडनी, शारजा जैसे बिएनाले और दुबई, लंदन जैसे आर्ट फेयर्स की तरह दुनिया में भारत के आयोजनों की भी बड़ी पहचान बने। और इसकी जरूरत इसलिए भी होती है कि आज मानव जीवन पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ता गया है और कोई भी दूर का जो देखता है वो नहीं चाहेगा कि उसका समाज रोबोट हो जाए। हमें रोबोट तैयार नहीं करने, हमने इंसान बनाने हैं। और उसके लिए संवेदनाएं चाहिए, उर्मी चाहिए, सद्भावना चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, आशा निराशा के बीच जीने के तरीके चाहिए। ये सारी चीजें कला और संस्कृति के माध्यम से पैदा होती है। जोड़ तोड़ के लिए टेक्नोलॉजी बहुत तेज काम कर सकती है और इसलिए इस प्रकार की चीजें मानव की भीतर के सामर्थ्य को जानना, पहचानना, उसे जोड़ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा देती है। और साथियों, अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही आज आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का लोकार्पण भी हुआ है। ये सेंटर भारत की यूनिक और रेयर क्राफ्ट्स को, दुर्लभ कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। ये कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने, मार्केट से इसे उन्हें इनोवेशन करने में मदद करेगा। इससे कारीगरों को डिजाइन डेवलपमेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी पारंगत होंगे। और हम जानते हैं भारतीय शिल्पियों में इतनी प्रतिभा है कि आधुनिक जानकारी और संसाधनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत में 5 शहरों में कल्चरल स्पेस बनाने की शुरुआत होना भी एक ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली के साथ साथ कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी में बनने वाले ये कल्चरल स्पेस इन शहरों को सांस्कृतिक रूप से और समृद्ध करेंगे। ये सेंटर लोकल आर्ट को एनरिच करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज को भी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने अगले 7 दिनों के लिए 7 महत्वपूर्ण थीम्स भी तय की है। इसमें देशज भारत डिजाइन और समत्व, इन थीम्स को हमें एक मिशन के रूप में आगे लेकर चलना होगा। देशज यानी इंडिजीनियस डिजाइन को एनरिच करने के लिए